And now let's take you to Gandhinagar, where a joint press conference is being held right now after the joint declaration. We now have the exchange of the joint declaration of intent on defense industrial cooperation. This document will be exchanged by His Excellency Dr. Philip Ackermann, Ambassador of Germany to India, and Shri Vikram Misri, Foreign Secretary of India. We now have the joint declaration of intent on strengthening the bilateral economic cooperation through the CEOs Forum. This document will be exchanged by His Excellency Mr. Stefan Raunhoff, Parliamentary State Secretary, German Ministry of Economy and Energy, and Shri Amardeep Singh Bhatia, Secretary for the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India. We next have the exchange of following three documents: the Indo-German Roadmap on Higher Education, the MoU for the development of National Maritime Heritage Complex in Lothal, Gujarat, and the MoU between All India Institute of Ayurveda and Charité University from Germany. These three documents will be exchanged by His Excellency Dr. Philip Ackermann, Ambassador of Germany to India, and Shri Ajit Vinayak Gupte, Ambassador of India to Germany. The final set of three documents to be exchanged include the MoU between Petroleum and Natural Gas Regulatory Board and the German Technical and Scientific Association for Gas and Water Industries, the Joint Declaration of Intent on Global Skill Partnership, and the Joint Declaration of Intent to establish an Indo-German Center of Excellence for Skilling in the Renewable Energy Sector. These documents will again be exchanged by our respective ambassadors. In addition, I am also very happy to announce that the 2-3 other important private sector partners who have concluded agreements during this visit, and these include the MoU between National Institute of Electronics and Information Technology and Infineon Technologies AG, the offtake agreement for green ammonia between Indian company AM Green and the German company Uniper Global Commodities on green ammonia,
and the letter of intent between the Department of Posts, Ministry of Communications, and the Deutsche Post. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Good afternoon, Your Excellency, Mr. Friedrich Merz, Chancellor of the Federal Republic of Germany, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I now request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to give his remarks to the media. Your Excellency, my friend Chancellor Friedrich Merz, जयंती के दिन चांसलर मर्ज का भारत में स्वागत करना मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है। ये एक सुखद संयोग है कि स्वामी विवेकानंद जी ने ही भारत और जर्मनी के बीच दर्शन, ज्ञान और आत्मा का सेतु बनाया था। आज चांसलर मर्ज की यह यात्रा उसी सेतु को नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया विस्तार प्रदान कर रही है। चांसलर के रूप में यह उनकी भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली यात्रा है। यह इस बात का सशक्त प्रमाण है कि वे भारत के साथ संबंधों को कितना गहरा महत्व देते हैं। उनके पर्सनल अटेंशन और कमिटमेंट के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत जर्मनी के साथ अपनी मित्रता और साझेदारी और सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गुजरात में हम कहते हैं, आवकारो मीठो आपजे रे, यानी स्नेह और आत्मीयता से स्वागत करना। इसी भावना के साथ हम चांसलर मर्ज का भारत में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, चांसलर मर्ज की ये यात्रा एक विशेष समय हो रही है। पिछले वर्ष हमने अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी मना रहे हैं। ये माइलस्टोन्स केवल समय की उपलब्धियां नहीं है, ये हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं, परस्पर विश्वास और निरंतर सशक्त होते सहयोग के प्रतीक है। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है और $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां लंबे समय से भारत में मौजूद है। ये भारत के प्रति उनके अटूट विश्वास और यहां मौजूद अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। आज सुबह भारत जर्मनी CEO फोरम में इसकी जीवंत झलक दिखाई दी। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग प्रति वर्ष मजबूत हुआ है और आज इसका प्रभाव ग्राउंड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत और जर्मनी की प्राथमिकताएं समान है। इसमें सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने इंडिया जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है।
ये नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का साझा मंच बनेगा। हम क्लाइमेट, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में मिलकर नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में दोनों देशों की कंपनियों का नया मेगा प्रोजेक्ट भविष्य की ऊर्जा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। भारत और जर्मनी सिक्योर, ट्रस्टेड और रेजिलिएंट सप्लाई चेन के निर्माण के लिए मिलकर के काम कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर आज किए जा रहे MoUs से हमारे सहयोग को नई गति और मजबूती मिलेगी। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक और गहरे पीपल टू पीपल टाइज हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने जर्मनी के बौद्धिक जगत को नई दृष्टि दी। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा ने जर्मनी सहित पूरे यूरोप को प्रेरित किया और मैडम कामा ने जर्मनी में पहली बार भारत की आजादी का ध्वज फहराकर हमारी स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को वैश्विक पहचान दी। आज हम इस ऐतिहासिक जुड़ाव को आधुनिक साझेदारी का रूप दे रहे हैं। माइग्रेशन, मोबिलिटी और स्किलिंग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। भारत की टैलेंटेड युवा शक्ति जर्मनी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज ग्लोबल स्किल्स पार्टनरशिप पर जारी जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इसी भरोसे का प्रतीक है। इससे खास तौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की आवाजाही आसान होगी। आज हमने खेलों के क्षेत्र में भी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। यह युवाओं को जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम बनेगा। आज हायर एजुकेशन पर बना कॉम्प्रिहेंसिव रोडमैप शिक्षा के क्षेत्र में हमारी साझेदारी को नई दिशा देगा। मैं जर्मन विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए आमंत्रण देता हूं। भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट की घोषणा के लिए मैं चांसलर मर्ज का आभार व्यक्त करता हूं। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच नजदीकियां और बढ़ेगी। मुझे खुशी है कि गुजरात के लोथल में बनाए जा रहे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से जर्मन मैरीटाइम म्यूजियम जुड़ रहा है। यह दोनों देशों की मैरीटाइम हिस्ट्री को जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम है। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के क्षेत्र में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का जर्मनी के साथ करीबी सहयोग रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे MoU से हमारा सहयोग को और अधिक बल मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी की हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हम चलते रहे हैं। हमारी दोस्ती का प्रभाव ग्लोबल स्टेज पर भी दिखाई देता है। घाना, कैमरून और मलावी जैसे देशों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट से हमारी ट्राइलेटरल विकास साझेदारी दुनिया के लिए एक सफल मॉडल है। हम ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए अपने साझा प्रयासों को आगे भी निरंतर जारी रखेंगे। इंडो पैसिफिक
दोनों देशों के लिए हाई प्रायोरिटी है। इस क्षेत्र में हमारे तालमेल को बढ़ाने के लिए हम एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमने यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। एक्सेलेंसी, 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं एक बार फिर आपका भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा भारत जर्मनी साझेदारी को नई ऊर्जा और स्पष्ट दिशा देगी। आपकी यात्रा, आपके व्यक्तिगत जुड़ाव और भारत के प्रति आपकी गहरी मित्रता के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। दांके शोन। Thank you, sir. May I now request His Excellency, Mr. Friedrich Merz, Chancellor of the Federal Republic of Germany, to give his remarks to the media. Exzellenz, sehr geehrter Herr Premierminister, lieber Narendra Modi, meine Damen und Herren, die erste Reise in diesem Jahr führt mich in der Tat nach Indien. Es ist auch zugleich die erste Reise nach Südostasien, die ich als Bundeskanzler unternehme. Und ich will damit ein Zeichen setzen für die strategische Partnerschaft mit Indien. Diese strategische Partnerschaft mit Indien hat für Deutschland, hat auch für mich eine hohe Priorität. Sie haben es bereits gesagt, 75 Jahre diplomatische Years of diplomatic relations. We share 75 years, and 75 years after establishing diplomatic relations, this holds true more than ever before. Our two countries are seeking to intensify and deepen our cooperation. This morning I had the opportunity to visit the birthplace of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is ascribed the following sentence: be the change which you hope for the world. We want to take heed of that together, dear Narendra Modi. We want to elevate the relations between India and Germany to an even higher and a new level. You invited me to visit your home state of Gujarat, and I would like to express my gratitude and express my heartfelt gratitude for this special gesture. It's a sign for the very deep ties between our two countries, but it's also a testament to the friendship towards me. Thank you very much. This city we're visiting today, Ahmedabad, in a certain way is the cradle of modern India. This is where Gandhi started his non-violent struggle and fight for freedom, self-determination and democracy. And the region, this part of India, Gujarat, represents a impressive economic dynamic. A dynamic of India ranging from textile industry via highly modern smart industrial parks and to a very lively startup scene.
Furthermore, the region is a pulsating location for universities, for engineering, and for applied sciences. Here in Gujarat, it becomes tangible what's important to both of us when it comes to this visit. The fundamental political values that we share, the tremendous economic potential that we see, and our ever closer interconnections with a view to skilled labor and education. And especially amid the profound geopolitical changes and upheavals in the world, we share a fundamental interest in deepening our strategic partnership. Europe and transatlantic relations remain important to us. Today, we need to forge a broader network of partnerships, and we need to do so swiftly and with a long breath at the same time. India is a desired partner, a partner of choice for Germany, and the preconditions for a renewed and deepened and intensified partnership couldn't be more favorable. Germany, as the most populous state and the state in the European Union, which is the most economically strong state in the European Union, and India is the biggest democracy of the world, we share fundamental values. The highly dynamic India and the highly technological Germany, we share essential interests, and this is what we build upon. Ladies and gentlemen, I want to focus on three priorities. First, we advocate for an international order in which we can live freely and securely. Because the world order is changing. The moment we are meeting here, it is increasingly marked by great power politics and thinking in spheres of influence. Rough winds are blowing, and we have to brace ourselves against these rough winds. Russia's war of aggression against Ukraine is probably the most drastic expression of these changes and this upheaval. Together, we are going to assert these values and interests that we share in this new world together. No, we don't always agree in all matters, and that holds true for our European partners as well, but the overlaps we're seeing are very big indeed. And this is why we want to cooperate more closely in the field of security policy. We host joint exercises of our Navy and our Air Force, and we have joint port visits, military joint visits, and we have forms of consultations. And we want to deepen our defense industries and the cooperation of our defense industries, and this has strategic significance. That strengthens both, and that leads to the fact that India is less dependent on Russia. You saw it. We signed groundbreaking memoranda of declaration. One memorandum stipulates the closer cooperation of our defense industries in the field of development and production, and the promotion of innovation and strengthening global supply chains. But not only do we intensify our defense industrial cooperation, but we also intensify our economic relations. Ladies and gentlemen, unfortunately, we're seeing a renaissance of protectionism. It's directed against the principles of free trade and open markets. And countries like India and Germany have been focusing on the principles of free trade and open markets, and we continue to focus on these principles in future. We're experiencing that great powers, big powers, use supply chains and raw materials increasingly as instruments of power. Together, we want to oppose this. We reduce unilateral dependencies of our supply chains, and that makes both of our economies more resilient. India, as the fastest growing economy of the G20, is a pivotal partner in the Indo-Pacific.
You mentioned it, Prime Minister. More than 2,000 German companies are active in India, and ever more Indian companies are investing in Germany, with a bilateral trade volume to the tune of almost $50 billion in goods and services at a record high. Germany is India's most important partner in the European Union. German and Indian companies are moving closer together in future technologies, and this is why we agreed to deepen cooperation in pivotal areas such as critical minerals, AI, digitalization and telecommunications, hydrogen, and battery storage. We want to deepen and intensify cooperation because innovation creates growth and requires academia, science, and research. We also foster and promote our cooperation in this field by way of the Indo-German Science and Technology Center. We are also working on establishing a joint center of excellence for technological innovations. And ladies and gentlemen, the fact that I'm accompanied by a large delegation of German top companies illustrates this dynamics impressively. We want to continue to remove obstacles and use and tap into potential. We discussed this together with Prime Minister Modi and leading CEOs at a round table, and I look forward to continuing this CEO forum to fully tap into full potential of our economic relations. We need to conclude the negotiations on a free trade agreement between India and the European Union. We need to use this opportunity. The President of the Commission are going to travel to India toward the end of this month and are going to sign this agreement. After it's concluded, they are going to undertake more progress and to bring this free trade agreement about. Allow me to say this also against the backdrop of the decisions of last Friday that the European Union concluded the Mercosur agreement. Finally is an encouraging sign on the path to continue down the road of forging and concluding free trade agreements. And thirdly, Prime Minister Modi said it, we want to continue to work in the field of education and skilled workers. Well-educated, skilled workers secure our prosperity. They're motivated, they're creative and innovative. Germany needs qualified professionals in the field of industry, in trade, nursing, IT, and in engineering. India has excellent young people who are well trained. It's an opportunity for both sides. We are opening up paths for legal and orderly migration from dual vocational training, studies, targeted visa and fast-track procedures and partnerships between universities and companies. 60,000 young people from India are studying in Germany. They account for the largest group of foreign students in Germany. The number of urgently needed, highly qualified, skilled workers from India in Germany is increasing rapidly. And as of now, Indians are among the most successful group of immigrants in Germany. And we want to continue and promote this in the future. We want to enhance this trend, for instance, by promoting and expanding digital offers for German language acquisition in India. And finally, with the Global Skills Partnership, we're creating a framework for Indian skilled workers in the field of the healthcare sector. Mr. Modi, Narendra Modi, Germany and India are two large democracies and strong economies that have many things in common. We want to build upon this, and we want to deepen our partnership and our security partnership. Indeed, we want to strengthen our economic relations, and together we want to promote talents in India and in Germany. We do this for the benefit of both sides. We do this for a world order which preserves our values and our interests, and we do so because we trust each other and because we want to get to know each other better via the many meetings.
I'm very happy to be in your home state today. I look forward to welcoming you towards the end of this year in Germany on the occasion of the German-Indian intergovernmental consultation, and we're hosting these consultations. And allow me to also address the developments in the not so far neighborhood in Iran. We're seeing for 2 weeks how people from all sectors of society are taking to the streets. They're protesting peacefully for freedom and a better life in their country. Not only is it their right to do that, I pay tribute to the courage with which they confront the disproportionate amount of violence, and I call upon the Iranian government and leadership to protect their citizens instead of threatening them. The violence directed at the Iranian people is something we condemn in the strongest of terms. This violence is not a testament an expression of strength, but a weakness, and this violence needs to stop. Allow me to say this in conclusion, because the news coming out of Iran are accompanying us while we're here on a visit to India. Once again, Honorable Prime Minister, dear Mr. Modi, thank you so much for the warm hospitality, for the amicable reception here in India. I'm delighted to continue our good cooperation between Germany and India, and also look forward to continuing our amicable cooperation on a personal level. Thank you very much. Thank you, sir. That concludes the press statements. Ladies and gentlemen, thank you for your presence. All right, we were watching live from Gandhinagar, where various documents were shared between both the countries, India and Germany, after the delegation-level talks and the joint declaration of intent by the CEOs Forum and various others. India and Germany affirmed their commitment to deepening their strategic partnership, and the leaders also issued a joint declaration emphasizing comprehensive cooperation across various sectors. There were joint press statements as well from both the leaders. Prime Minister Modi said that it was Chancellor's first visit to Asia itself, and Prime Minister thanked him for his personal attention and commitment and welcomed him to India. Well, Prime Minister also said that India and Germany are celebrating 75 years of India-Germany diplomatic ties and 25 years of India-Germany strategic partnership. And Prime Minister said that technological cooperation has increased between both the countries. He also spoke about both the countries have decided to focus on climate, energy and green hydrogen as well, including resilient supply chains. He said defense cooperation will also get more boost with enhancing joint production, technology sharing and long-term security cooperation as well. He also spoke about the easier movement of healthcare professionals and also more cooperation in sports and education as well. While Prime Minister also said that friendship between both the countries is a successful model for the world amid global challenges, and both the countries believe that there was a need to reform the global organizations. Also, German Chancellor Friedrich Merz said that 75 years of diplomatic relations define a deeper cooperation between both the countries. He mentioned about his visit to Sabarmati Ashram this morning, and the Chancellor expressed his gratitude for the invitation to the Prime Minister. He said that this was a place where Gandhiji started his struggle for independence, and he said, we share fundamental values and India is a desired partner or partner of choice for Germany. And he said that we want to deepen our defense industries and production and synchronizing in global supply chains, including enhancing our economic relations and free trade, making both the economies more resilient. He also spoke about how both the countries are moving forward in technological innovation and digitalization. He also spoke about how India had a whole lot of young people and how a big part of them are studying in Germany. Also, he spoke about cooperation in skilled sectors and strengthening talent in both the countries, and he was delighted to take the cooperation forward between both the countries. जर्मनी सीईओस फोरम में शामिल होने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस फोरम की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर हो रही है, जब हम भारत जर्मनी रिश्तों की प्लेटिनम जुबिली और भारत जर्मनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की सिल्वर जुबिली मना रहे हैं। यानी हमारे रिश्तों में प्लेटिनम की परमानेंसी और सिल्वर की चमक भी है।
फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी की पार्टनरशिप एक सीमलेस पार्टनरशिप है जिसकी नींव साझा मूल्यों और आपसी विश्वास पर टिकी है। हर सेक्टर में हमारे बीच म्यूचुअली बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज है। हमारी एमएसएमईज और जर्मनी की मिडिल स्टैंड के बीच जारी मैन्युफैक्चरिंग सहयोग, आईटी और सर्विस में तेजी से बढ़ता सहयोग, ऑटोमोटिव, एनर्जी, मशीनरी व केमिकल सेक्टर्स में जॉइंट वेंचर्स और रिसर्च कोलैबोरेशन से उभरती नई टेक्नोलॉजी और इन मजबूत लिंकेजेस का सीधा लाभ हमारे व्यापार को मिला है, जो आज लगभग $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। फ्रेंड्स, दुनिया तेजी से बदल रही है। हम देख रहे हैं कि कैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और कैपिटल मशीनरी पर निर्भरता को आज वेपनाइज किया जा रहा है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के पावन अवसर पर हमें उनके विचारों और संदेश से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका संदेश स्पष्ट था कि एक सशक्त राष्ट्र वही होता है जो आत्मबल, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी के साथ दुनिया से जुड़ता है। आज के वैश्विक संदर्भ में यह संदेश और भी प्रासंगिक है। इसी सोच के अनुरूप हमारा साझा दायित्व है कि हम दुनिया के लिए ट्रस्टेड और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स को मजबूत करें और इस प्रयास से भारत और जर्मनी जैसे भरोसेमंद साझेदारों की पार्टनरशिप निर्णायक भूमिका निभाती है। फ्रेंड, अपनी पहली एशिया यात्रा के लिए चांसलर मर्ज ने भारत को डेस्टिनेशन बनाया। यह जर्मनी की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी में भारत की केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है और यह भारत के प्रति जर्मनी के भरोसे का स्पष्ट संकेत है। इसी भरोसे के अनुरूप आज हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सबसे पहले हमने तय किया है कि इस सीमलेस इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लिमिटलेस बनाया जाए, यानी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर्स के साथ साथ अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी गहरा सहयोग होगा। डिफेंस क्षेत्र में आज हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट का एक्सचेंज कर रहे हैं। इससे डिफेंस में को इनोवेशन और को प्रोडक्शन के लिए हमारी कंपनियों को स्पष्ट पॉलिसी सपोर्ट मिलेगा। स्पेस सेक्टर में भी अब सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। दूसरा, हम इस बात पर भी सहमत है कि ट्रस्टेड पार्टनरशिप को अब टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का रूप दिया जाए। दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग और गहरा करेगी। सेमीकंडक्टर्स में हम म्यूचुअल पार्टनर्स हैं। इसके साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक, फिनटेक, फार्मा, क्वांटम और साइबर ऐसे क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं हैं। तीसरा, हम सबको इस बात पर पूरी क्लैरिटी है कि इंडिया जर्मनी पार्टनरशिप न केवल म्यूचुअल बेनिफिशियल है बल्कि यह दुनिया के लिए भी बेहतर है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर, विंड और बायोफ्यूल में वर्ल्ड लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसमें जर्मन कंपनीज के लिए सोलर सेल्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स, बैटरीज और विंड टर्बाइन्स जैसे क्षेत्रों में
मैन्युफैक्चरिंग की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हम मिलकर ई मोबिलिटी से लेकर फूड और हेल्थ सिक्योरिटी तक दुनिया के लिए सॉल्यूशंस विकसित कर सकते हैं। एआई को लेकर भारत का ऑल इंक्लूसिव विजन है। जब जर्मनी का एआई इकोसिस्टम इससे जुड़ता है तो हम एक ह्यूमन सेंट्रिक डिजिटल फ्यूचर सुनिश्चित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत का टैलेंट पूल जर्मन इंडस्ट्री की इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने में सक्षम है। पिछले कुछ वर्षों में खासकर हाईटेक सेक्टर में स्किल्ड मोबिलिटी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हम जर्मन कंपनीज को आग्रह करते हैं कि वे भारत की प्रतिभा का पूरा उपयोग करें और स्किल, इनोवेशन तथा इंडस्ट्रियल लिंकेज को और मजबूत करें। फ्रेंड, आज के चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में भारत 8% अधिक ग्रोथ से साथ आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि सतत और व्यापक रिफॉर्म्स हैं। हर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो डिफेंस हो या स्पेस, माइनिंग हो या न्यूक्लियर एनर्जी। कंप्लायंसेस लगातार कम हो रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है। इन्हीं प्रयासों ने भारत को आज दुनिया के लिए ग्रोथ और ऑप्टिमिज्म का सिंबल बना दिया है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी जल्द साकार होने जा रहा है। यह हमारे व्यापार, निवेश और साझेदारी के लिए एक नया अध्याय खोलने वाला है। यानी आपके लिए रास्ता क्लियर है। मैं जर्मन प्रिसिशन और इनोवेशन को भारत की स्केल और स्पीड के साथ जुड़ने का आमंत्रण देता हूं। आप भारत में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, डोमेस्टिक डिमांड का पूरा लाभ उठा सकते हैं और बिना किसी बाधा से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फ्रेंड, सरकार की ओर से मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि भारत जर्मनी के साथ सहयोग को स्टेबल पॉलिसीज, म्यूचुअल ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ाएगा। मेरा संदेश संक्षेप में यही है, इंडिया इज रेडी, विलिंग एंड एबल। आइए हम मिलकर इनोवेट करें, इन्वेस्ट करें और ग्रो करें। भारत और जर्मनी के लिए ही नहीं, वैश्विक भविष्य के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस तैयार करें। दाके शॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. The invitation to this CEO forum and for the valuable opportunity to meet and to exchange ideas with you in person today and with the Indian government and the Indian and German business leaders. I'm really happy to have the opportunity to see you all and to meet with you and to speak. Before I come to our business opportunities, let me thank you, Mr. Prime Minister, for your warm hospitality and for your invitation to come to India and to welcome my delegation and to have this warm welcome even late in the night or early in the morning when we arrived here in this place, which is your home state, which is something we really find valuable and we really appreciate. Now, dear business leaders, it's no coincidence that India is the first Asian country I'm visiting as Chancellor. It comes at a time where profound global changes are challenging us. Technological transformation and geopolitical uncertainty affect the way our economies operate and compete. Against this backdrop, the partnership between Germany and India is a strategic
asset, economically, politically, and in a global context. I want to share with you 3 brief observations. First, India's and Germany's trade and investment relationship. India is an important trading partner for Germany, and the trade volume between the EU and India is at a record high. I believe we can benefit even more from mutual trade based on open markets and rules-based cooperation. Germany and India share long-standing trust, political principles, and strong democratic institutions. These principles provide orientation and predictability for our economic partnership. Success is also a question of speed, the right investment climate, investor confidence, and room for maneuver. Innovation cycles are becoming shorter, markets more demanding, and competition more global. Those who succeed are able to invest early, move fast, and bring solutions to market at scale. Governments have a responsibility to provide reliable, predictable, and enabling framework conditions for trade and investment. This creates space for business to invest, to innovate, to expand, and cooperate across borders. My government, and I'm in person, we are working tirelessly to make Germany even more attractive for foreign investments. We are tackling overburdening bureaucracy, eliminating obsolete or stifling regulations, simplifying procedures, and accelerating the digitization of public administration. Under my government, ladies and gentlemen, Germany is open for business and open for business cooperation. At the same time, we are strongly interested in further opportunities for German business in India. A second key topic is innovation. Germany and India are strong markets. We are innovation-driven economies with complementary strength in research, engineering, manufacturing, and entrepreneurship. Innovation fosters growth, and our businesses are key drivers for innovation. There are significant opportunities for cooperation across industries and across technologies. Looking ahead, the full economic potential of our partnership is yet to be exploited. Unlocking it requires ambition, reliability, and close cooperation between businesses and government, and a shared commitment to innovation and future-oriented business models. And finally, there is the changing geopolitical landscape, which brings opportunities, but also challenges for government and business. If we want to remain competitive in this world and sustain long-term economic growth, we must strengthen our resilience. This means partnering with trusted actors, promoting openness and fair competition, and protecting our economic base against one-sided dependencies and their weaponization. Diversification and rules-based frameworks is how to put this approach into practice. For this reason, Germany supports an ambitious and economically meaningful EU-India free trade agreement as a central pillar for stable and future-oriented economic engagement. We cannot let this chance go by. And we are pursuing more diversification by way of strengthening our supply chains
for example, in the field of critical resources. For governments, the role is clear, not to direct business decisions. That's not our way to work, but to ensure solid, reliable, and favorable conditions for trade and investment, nationally, bilaterally, and at the international level. In this case, between the European Union and India, in terms of bringing our free trade agreement forward. Now, political dialogue and business exchange go hand in hand. This forum brings together those who shape political frameworks and those who take business decisions. It underscores once more the depth and breadth of the economic relationship between Germany and India. I'm therefore glad, dear Mr. Prime Minister, that our two governments have agreed on a memorandum of understanding to put this CEO forum on a new elevated footing. I'm looking forward to sharing this forum again in the future. Finally, let us carry the spirit forward with determination, ambition, and a shared focus on implementation. I'm really thankful, I'm glad to be here, and many thanks to you sharing this forum, doing the work, and many thanks again, Mr. Prime Minister, for our close cooperation, which has not only begun today, we met before, but this is now a meeting which is really opening a new page in our cooperation between India and Germany. Many thanks for your kind hospitality. Well, we were watching live from Gandhinagar, Gujarat. Speaking at the India-Germany CEO Forum, Prime Minister Modi said that our relations are like a seamless partnership and it's placed on mutual benefits, and the benefits are being enjoyed by the business sector crossing 50 billions. He said it is our endeavour to strengthen the supply chains, and he said the Chancellor's visit is indicative of his giving prominence to India. Prime Minister spoke about the increasing defence cooperation in space sector and semiconductors also, and Prime Minister also said that India-Germany partnership is great for the world as well. He said that India was moving forward to become a world leader in green energy, and Germany is going to be a support in the same. Prime Minister also mentioned about India's vision of AI, and combining with Germany will add a further boost to it. Well, Prime Minister said that in the current geopolitical world, India is showing 8% growth as India is giving impetus to ease of doing business. And Prime Minister said that let's grow together, not only for both the countries, but for the world at large. Also, Chancellor Merz said that it was great to be in India, and he thanked for all the warm welcome he and his delegation received. He said that his visit comes at a time when profound global changes are challenging the world, and he said the partnership between both the countries was a strategic asset economically and politically across various sectors. He said that Germany was working tirelessly to make the country more open to business, and he said that we are strongly interested in business in India. He said that he was keen on innovation and tap on opportunities for more partnerships and future-oriented business models as well. And he also said that Germany supports India-EU free trade, and he said he's looking forward to sharing this forum in the future as well. Well, earlier, Prime Minister Narendra Modi and the visiting German Chancellor Friedrich Merz held bilateral talks in West Indian city of Gandhinagar. The two leaders discussed the entire gamut of bilateral relations between the two nations, and that was the gist of the statements by both the leaders. All right, that's all for this edition of DD India Live, but let us know your thoughts on the news of the day. For those on the go, you can get all the latest news and updates from India and across the world. The app is available on both Android and iOS platforms. Scan the QR code on the screen to download now. We'll be back with more news as it breaks here on DD India. I'm Lipakshi Khurana from all of us here in Delhi. Thanks for watching DD India Live.